हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पेपर। क्या है RGUCET 2024। किसका है? B.Ed का है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, आर्ट्स स्ट्रीम का है बेसिकली। और इसमें दो सेट था 2024 में। तो हम लोग देखते हैं अभी पहले, सबसे पहले सेट 1 को देखता है, सेट ए। इट वॉज नॉट ए गुड डे इज एन एग्जाम्पल ऑफ। किसका एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल है लिटोट्स का एग्जाम्पल है। फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। नीचे दिए गए ऑप्शन से हम लोग फिल द ब्लैंक्स करेगा। द Discontent among the people is the outcomes of the policies carried by the people at the helm. The further prop shows manner which will not be tolerated by। तो अभी हम लोग इसका fill in the blanks को भी choose करेगा कौन सा appropriate होगा। The the palpable the palpable the palpable P से start करते, the palpable is commented upon the amorphous policies. Option D is the correct for question 2. Question number 3. Which of the following sentences is not meaningful in true sense? इनमें से कौन सा सेंटेंस जो कि ट्रू सेंस में करेक्ट नहीं है पूछ रहा है। I have never seen such a operose person like him. His steady approach has made him a successful person. Okay. Due to Otio's nature, he has got good percentile in the CAT exam. He has nose for unearthing talent. Okay. सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका सिर्फ और सिर्फ ये बनता है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी है, जो कि सी ओनली। ओके, सी ओनली ड्यू टू ओटियोस नेचर ना, उसका ओटियोस नेचर होने का कारण वो कहते एग्जाम क्वालिफाई किया। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। मैच द फॉलोइंग वर्ड इन टर्म्स ऑफ सिमिलरिटी। ओके, हम लोग सिमिलरिटी के टर्म में ये टर्म्स को अभी मैच करके देखेगा। एसाइडोस, एसाइडोस किसको बोला जाएगा? एसाइडोस मतलब सेलिडुलोस। एन ओपेरोज, ओपेरोज 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 कहीं में पढ़ा था क्या? सुना था जिसे लगा ओपेरोज। ओपेरोज ओपेरोज कहाँ हो जाएगा? इसका 3 चला जाएगा। एन ओटियोस, ओके अभी अभी देखा था, इसका 2 है और डी का 1 है। ये सेम सीक्वेंस है। जो स्टार्टिंग हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? पीछे से स्टार्ट हो रहा है, 4 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ऑप्शन सी है क्या? नहीं, ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन ए होगा, क्योंकि यहाँ पूरा देख सकते हैं आप लोग 4 से लेके 1 तक जा रहे हैं ना। why and wherefore means, why and wherefore means का मतलब क्या होता है? द बेसिक रीजन होता है। what is the name of the weak zone of the earth crust? ओके, अर्थ क्रस्ट का वीक जोन का नाम क्या है? सबसे वीक जो वीक जोन का नाम क्या है? सिस्मिक है। In 2019, which popular singer has awarded the Bharat Ratna Award? Okay, इनमें से किसको भारत रत्न मिला था? भूपेन हाजरिका सर को मिला था, ये आसाम के रहने वाले। Which of the following statements are not false? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो कि गलत नहीं है? Octopus has 6 arms and 2 legs. ऑक्टोपस का पास 2 पाँव है और 6 आर्म्स है, सही है वो तो। Herbivores are animals eaters. Herbivores क्या है? Animals eater है। Now herbivores जैसे जो घास खाता है। Crocodile have 4 chamber heart, ये भी सही है। क्रोकोडाइल के पास 4 हार्ट का चेंबर होता है। स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज कार्डियोलॉजी। नो, कार्डियोलॉजी हार्ट का स्टडी को बोलता है। सो द ऑप्शन ए एंड सी इज करेक्ट। ए एंड सी, ऑप्शन बी करेक्ट, ए एंड सी ओनली। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी? किसको बोला जाता है फादर ऑफ? हम लोग पढ़ा था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने हमारे भारत को एटम बम बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हियर फॉर मैचिंग पेयर्स। एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, बापू। बापू को क्या बोला जाता है? बापू को द एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के साथ जाना जाता है। लियो टोलस्टॉय, लियो टोलस्टॉय किसको बोलते हैं? लियो टोलस्टॉय वार एंड पीस,
पोलेतो, पोलेतो किसको बोलता है बोलने से? पोलेतो दी रिपब्लिक को बोला जाता है, दी फोर्थ वन. सो द आंसर इज करेक्ट आंसर. व्हिच वन इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ओके. So which is an online app for citizen to report on the model code of conduct violation during election period? Okay. इनमें से कौन सा ऑनलाइन ऐप है जिसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन के द्वारा हम लोग रिपोर्ट करता है? कौन सा है बोलने से सी विगिल ऐप से, ये ऐप से, इसमें आप लोग भी कर सकते हैं. द इंडियन सुपर लीग ISL 23-24 वाज ओन बाय, किसने जीता था? इसको जीता था मुंबई सिटी FC ने. हु of the following personality from the Czech Republic has won the Miss World 2024 title at the Grand Event in Mumbai? किसने जीता था ग्रैंड इवेंट मुंबई में? इनको जीता था इन्होंने. ऑप्शन बी इज द करेक्ट. ऑस्ट्रेलियन वुमेन ओपन 2024 was won by, किसने जीता था? won by the Ariana Sabalenka. We have to match question number 15, list 1 and list 2. So the cricket and the relatable this one. पार्थिव गोगोई, रियम पराग, रमेश बाबू, किशोर जेना, किशोर जेना, किशोर जेना. सो क्रिकेट किससे रिलेटेड है? रियाक पराग से. एंड जो फुटबॉल है, फुटबॉल का प्रदीप गोगोई है असम का. जावेलिन, जावेलिन का किशोर जाना. एंड चेस रमेश बाबू, रमेश बाबू. So the option C is the correct for question number 15. Question number 16. The average age of the Binjum, Jumgam and Naka is 27 years. And ratio of their age 234. Okay. The difference between the age of the Naka and the Jumgam is नाका और जुंगा का एज डिफरेंस कितना है बता बोल रहा है. 9 years ये दोनों का एज जो की डिफरेंस है. क्वेश्चन 17. ए साइकिलिस्ट मूव 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ. एक साइकिल चलाने वाला व्यक्ति जो 4 किलोमीटर नॉर्थ चला और टर्न किया राइट. नॉर्थ से राइट जाएगा 90 डिग्री, तो कहाँ जाएगा? नॉर्थ से ईस्ट जाएगा. आफ्टर मूविंग 6 किलोमीटर टर्न हाफ राइट. ठीक है, यहाँ चला गया नॉर्थ से ईस्ट चला गया, ईस्ट से हाफ गया तो क्या हो जाएगा? हाफ मुड़ा. अभी भी ईस्ट में ही है, अभी भी ईस्ट में ही है, अभी नॉर्थ ईस्ट में ही है, अभी ईस्ट और नॉर्थ के बीच में है. देन मूव 5 किलो. हाउ फार इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट वो नॉर्थ से 4 किलोमीटर चला था, उसका बाद राइट टर्न किया था, उसका बाद वो 6 किलोमीटर चला, वहां से हाफ मुड़ा. ओके. देन मूव 5 किलोमीटर. हाउ फार इज मूविंग स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूरी में है बोलने से हाउ मेनी, ये जो कि 9 किलोमीटर है. Which of the following word appear first in the dictionary? इनमें से कौन सा पहले आएगा? सबसे पहले TR. ट्रांसफ्यूजन आएगा कि ट्रांसमिशन आएगा कि ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसलेशन? ट्रांस सब में ऐसे ट्रांस है. ट्रांस. सबसे पहले ट्रांसफ्यूजन आएगा क्योंकि देख सकते हैं ट्रांस सब में कॉमन है, ट्रांस सब में कॉमन है. उसका क्या आता है? L P M. L का बाद M आता है, उसका P आता है, लेकिन F पहले आता है ना. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 19 में चलता है. इन अ लाइन ऑफ 37 पर्सन A and B stand at 10th and 16th rank respectively from the two. What are their ranks from the bottom? 37 पर्सन है एक लाइन में, जो कि A और B जो A जो 10 नंबर में खड़ा कर रहा है और B जो 16 नंबर में खड़ा कर रहा है. From the two, आगे से. What are their ranks from the bottom? नीचे से उन लोगों का रैंक कितना होगा? 37 से अगर 16 गया तो 19, और ये कितना हो जाएगा? 27. तो ऑप्शन इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें? इसका ऑप्शन ए करेक्ट है. Choose the correct alternative from the given one.
which will complete the later series PAZ, PBY, PCX, PDW। इसका कौन सा वर्ड को ये कंप्लीट करेगा, अलग से PEV वर्ड को कंप्लीट करेगा। सब में PPP स्टार्टिंग है, ओके। तो यहाँ पे P होगा। A B देख सकते हैं यहाँ सेंटर वर्ड ABCD, तो P का बाद E होगा। ZYXW क्या था, VUV आता है ना, तो देख सकते हैं सब ये सीरियल वाइज आ रहा है। 21 द इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू व्हिच एज, कौन सा एज में से द सिविलाइजेशन बिलोंग्स करता है बोलने से बेसिकली इसको ब्रोंज में लाइज करता है। द टाइटल विक्रमादित्य वाज एज्यूम बाय, किसने एज्यूम किया था, ये चंद्रगुप्त टू ने किया था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। द मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस इन अकबर, मनसबदारी सिस्टम जो कि अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था। हे देखो दिस सिस्टम फ्रॉम, कौन सा कंट्री से उन्होंने अडॉप्ट किया था, मंगोलिया से उन्होंने अडॉप्ट किया था, ओके। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। मैच द बुद्धास लाइफ इवेंट विद द प्लेसेस एसोसिएटेड विद द, ठीक है। बुद्धा का बर्थ प्लेस कहाँ था बोलने से बोध गया, बिहार में है ये जो बोध गया। बोध गया कहाँ में बोलने से बिहार में बोध गया, लेकिन बुद्धा का जन्म बोध गया में नहीं होता है, वहाँ रहता है बोध गया में नहीं, लुम्बिनी में उनका जन्म होता है बर्थ प्लेस। डेथ प्लेस क्या है बोलने से उनका डेथ प्लेस है कुशीनगर, जो कि यूपी में है, यूपी में है कुशीनगर। और जो फर्स्ट सरमन क्या है बोलने से सरनाथ है। और जो कि क्या है अटेनमेंट ऑफ सुप्रीम नॉलेज, ये बुद्ध गया से किया था बिहार में, जो कि बोध गया में इनको नॉलेज सुप्रीम अता हुआ था, मिला था। सो द ऑप्शन सी इज द करेक्ट। 4 1 4 1 2 and 3। Question 25, who ruled over Taxila when Alexander invaded India, इसमें किसने रूल किया था बोलने से अम्बी ने रूल किया था जब अलेक्जेंडर ने यहाँ इन्वेजन किया था इंडिया में। विच स्टेटमेंट आर ट्रू टू वेस्को दा गामा, वेस्को दा गामा हिस्ट्री का है वेस्को दा गामा। वेस्को दा गामा ये जो कहाँ से मिलता है बोलने से ये वेस्को दा गामा बेसिकली ये पोर्टुगीज से मिलता है एंड कलिकत, ये इवेंट इससे मैच करते हैं। सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27, द आइलैंड ऑफ द बम्बई वाज गिवन टू द ब्रिटिश प्रिंस चार्ल्स टू एज डोरी बाय हुम, किसने दिया था, तो उनको दिया था पोर्टुगीज ने दिया था। मैच द पेयर्स विद देयर लिंक्स, सो हम लोग को भी यहाँ से इसमें मैच करना है सेमावेदा। समावेदा किस समय को बोला जाता है, समावेदा में आप समावेदा जो क्या होगा म्यूजिकली रेंडर्ड को बोलते हैं। एंड जो अत्रवेद है वो मैजिक और स्पेल्स को बोला जाता है। और पुरानास क्या है, पुरानास काली एज को बोलता है। एंड उपनिषद उसको बोलते हैं फिलोसॉफिकल ट्रीटिस को बोलते हैं। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 29। मैच द पर्सनालिटीज विद देयर करस्पॉन्डिंग एक्कॉम्प्लाइजमेंट। ए में क्या दिया है, MK गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, बापू को दिया है। तो बापू इसका आंसर है 4 है। पियोनियर द वुमेन सफरेज मूवमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट, गांधी जी ने यूनाइटेड स्टेट में सफरेज मूवमेंट किया था। मार्टिन लूथर किंग जो किंग था जो अफ्रीकन अमेरिकस का जो यूनाइटेड स्टेट में इक्वलिटीज के लिए फाइट किया था। एलिजाबेथ कैरी स्टैंटन, दिस विल ये सॉरी यहाँ का होगा। और जो नेल्सन मंडेला कहाँ का था, नेल्सन मंडेला था साउथ अफ्रीका का। नेल्सन मंडेला प्ले ए की रोल इन एंडिंग अपार्थाइड पॉलिसी इन द साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का पॉलिसी में उन्होंने बहुत बड़ा रोल निभाया था। तो वन का है लीड इंडियन नेशनल मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश, या सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट।
for question number 29. Question number 30. The principle of Ashoka Dhamma were taken from. कहाँ से लिया गया था इसको? The moral virtue of all Indian religions of that period. Option D is correct for question number 30. तो बेसिकली हम लोग B.Ed का क्वेश्चन देख रहे हैं 2024 का देख रहे हैं A सीरीज में. Question number 31. Question number 31. Identify the correct statement which are related to Mughal Empire. Baburnama was written by Abdul Hamid. Baburnama was written by Abdul Hamid. ये गलत है. Baburnama was written by Babur. सही है. Akbarama was written by Akbar. क्या इसको अकबर ने लिखा था? बिल्कुल नहीं, गलत है. Akbarama was written by Abdul Fazal. सही है एकदम. B and D. Option C is correct for question number 31. The biography of King Harsa Kshatriya was composed by. किसने कंपोज किया था? बनावता ने कंपोज किया था. Option C is correct. Question number 33. Economics of the education cover the generation, allocation and utilization of resources for education through. किसका through से? Creation of human capital. Creation of human capital. So the option A is the correct for 33. Option 34. Which one of the following is not a principle of economic of education? इसका तो capitalism होगा. Option D is correct. Here in question number 35, there is a assertion and the reason given that government invest in education to foster economic growth and social development. Is it correct or not? Where reason is given that building human capital is essential for the progress of a nation. Let's see in the light of above statements, and we have to choose the appropriate answer from the given below. Here the given both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Is it correct? Yes, obviously is it correct. So the option 1 is correct. So option A is correct for the question number 35. The relevance of manpower planning in education was focused first in. कहाँ में firstly focus किया था? लकड़ी में. Wood dispatch. Option C is correct. Let's see the question number 37. Here we have to match the list 1 and list 2. In list 1, A, given that basic education to improve literacy and numeracy has an important implication for a basic human capital. Is it correct? So, A. This is the correct for A, education. And direct training for skills related to jobs, electricians, plumbing, nursing. So this is the vocational training. In vocational training we get electrician, nursing, plumbing, draftsman. In C, an education which enables children to think outside the box can increase human capital. This is the answer for C. Because climate of creativity, it's only depend on the creativity. Let's see the option number C, last one. Infrastructure of an economic will influence human capital. So the infrastructure is for the D. The vocational is for the B, means 2. So the option is C. Question 38. Economic of education is the study of economic issues relating to education including. So here the option is all the given options is correct. Option D is correct. Human Development Index HDI is a static development and compiled by the United Nations since 1990. Okay, to measure various countries level of. किस चीज का लेवल को मेजर करने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बनाया गया था? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को इसलिए बनाया था, क्या मेजर करने के लिए? सोशल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था. सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर बोथ ए एंड बी. कैपिटलिज्म refers to capital, it refers to the related to money. So the capitalism means private ownership of capital goods.
Option C is correct. Question number 41. The goal of a pure market economy is to meet the desire of, which desire we have to meet? Consumers. Option A is correct. Question number 42. The concept of Human Development Index was created by who? Created Pakistani economist who he created the Human Development Index in 1990. The concept of human, it's over. Question. The reason for the decline in the child sex ratio in India is, what is the reason? Only the female feticide is the reason responsible. Question number 44. The factors that are taken into consideration while revising the poverty line periodically is are both A and B. By conducting a survey every 5 years. Okay, this is correct. And survey carried out by National Sample Survey Organization. Yes, is it also true? That's why option C is correct for both A and B. Let's move to the question number 45. Limestone is one of the most common sedimentary rock formed from where? From chemical precipitation. Option A is correct. Question 46. The headquarters of World Meteorological Organization means WMO is located at where? It is located in the Geneva. Option A is correct. Question number 47, sorry. The thermal equator is found at where? It is found thermal equator. It is found to the north of the equator. Option D is correct. The spread of desert condition is called a desertification. It is the result of, what is responsible for this? This is the only result for the deforestation, overgrazing, poor agricultural practices, and reduced rainfall associated with the climate change. So the option C is correct for question number 48. In question number 5, there is given list 1 and list 2. We have to match each other. So let's see. Lipu Lake. Lipu Lake is situated in Uttarakhand. Nathula is in Sikkim. Sipkila, this is in Himachal Pradesh, and Jojia in Jammu Kashmir. So the option C is correct for question number 49. Let's move to the question number 50. Topophila was coined by, who coined the Topophila? Y.F. Thorne. So the option number C is correct. In question 51, the clouds that are found at high altitudes are the cirrocumulus. Option C is correct. Cirrocumulus. Of question number 52, the lithosphere is the outer zone of the earth that includes, what includes in lithosphere? The crust and the cooler upper part of the mantle. So the option C is correct. Question 53, again we have to match the correct pairs. In given that in A, Tuganbhadra Dam, where it is situated, where it is located, Tungabhadra Dam, it is located in Karnataka. Tawa Dam located in Tawa Dam located in Madhya Pradesh. Here A is missing in the option, so make sure correct. Uska baad next Tehri Dam is located in Uttarakhand, and Mulla Periyar Dam in Uttarakhand. So the option A is correct for 53. Let's see the question number 54. Jet stream is what? It is the upper air where there lies. Option B is correct. In question 55, the admixture of smoke and haze is known as smog. Smudge, then smoke. So the option C is correct. The mixture of smoke and haze is known as smudge.
Question number 56. Landforms shaped by the processes and agents of denudation belongs to a broad group of belongs from which groups? It belongs to uh, sequential landforms. Option B is correct. Question 57. The primary aim of political theory is to study is to study political principles and ideas. Political principles and idea. Option A is correct. In question 58, in the political theory, the term sovereignty is described to power to make law. Power to make law. Option D is correct. The basis of legitimate political authority according to the political theorists is socialism. Option uh, rule by the dynasty. Sorry. So the rule by the dynasty option C is the correct. In the question number 60, the political theory urges in favor of the economic and political system based on the public ownership of the means of production is known as socialism. Is socialism. Option A is correct. The word freedom is a political context. Is best defined as where it best defines the word freedom. It defines in it defines in B as ability to participate in decision making processes that affects one's life. So the option B is correct. In question number 62, fundamental right is mentioned in Indian Constitution in which chapter? It is mentioned in chapter number 3, the fundamental rights in Constitution. A right to freedom of speech is considered as an example of which example it is considered negative right. It is considered in negative right. So option D is correct. In question number 64, the term citizenship means citizenship. What citizenship is mean? The term citizenship means the legal status of being a member of a state. So the option B is correct. In 65, the difference between nationalism and patriotism is patriotism focus on. So the option is correct. Patriotism focus on individual loyalty, while nationalism emphasized collective identity. Question number 66. The rule for debiting and crediting personal accounts is to debit the receiver, credit the giver. Debit the receiver, credit the giver. So the option B is correct. Question 67. North Atlantic Treaty Organization (NATO) is popularly known as the Washington Treaty. So the NATO, popularly known as the Washington Treaty, the Warsaw Pact 1955 was led by who led the Warsaw Pact? The Soviet Union. Option A is correct. The idea of positive liberty is defined as the option A, the capability of individual to pursue their goals effectively. Okay, direct restrictions on the freedom by the state is depicted in which of the following? Question number 70. Option is In question number 70, the correct option is option number C, enforcing compulsory military service during emergencies. Okay. Question number 71. Which of the following is not a source of long-term finance? Long-term finance. Which one of the not? This is bank overdraft. Option C is correct. Working capital is calculated as current assets, and current liabilities. Option A is correct. Which of the following is not a method of financial forecasting? General partnership, financial forecasting. So which one is option C is correct. Break even analysis. The Partnership Act 1932 is applicable to general partnership.
Option D is correct. The formula to calculate the sacrifice by a partner in a partnership is old share of profit, new shares of profit. Option A is correct. The lowest layer of the atmosphere is known as by troposphere. Option B is correct. The emission of which gas creates global warming? कौन सा गैस निकलने से ग्लोबल वार्मिंग होता है? सबसे मेन गैस से रेस्पॉन्सिबल कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत ही डेंजरस है ये, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें 2 ऑक्सीजन होता है कार्बन डाइऑक्साइड में. These are very toxic gases. So the option C is correct for the 77. The formula to calculate normal profit is, how to calculate normal profit? First, firm capital into normal rate or of annum. So the correct option is option B. Firm's capital into normal rate of the return divided by 100. Okay. Option B is correct. Question number 75. In which situation would a company require shareholders to pay the remaining amount due on their shares? Calls in arrears. Calls in arrears. Arrears. Option A is correct. In question number 80, what defines an equity share according to section 43 of the Companies Act 2013? A share that does not enjoy any preferential rights. A share that does not enjoy any preferential rights in individuals or capital repayment. So the option B is correct for 80. Question 81. Given that income tax is a direct tax. Remember, income tax is a direct tax, not indirect tax. Okay. Option B is correct. The question number 82. What does TQM stand for? TQ का फुल फॉर्म क्या होता है? टोटल क्वालिटी मेजरमेंट होता है क्या, या मॉनिटरिंग होता है, या मैनेजमेंट होता है, या मैनेजमेंट होता है? मेजरमेंट, मॉनिटरिंग, मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मेजरमेंट और टोटल क्वांटिटी मेजरमेंट. सो इसका क्वालिटी मेजरमेंट होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट होता है. ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर 82. क्वालिटी को इसमें मैनेज किया जाता है TQM में. If a consumer's total utility from consuming 5 units of a good is 50 units, what is the average utility? Average utility is 10. 50 को 5 से डिवाइड करो, 10 5 10 50. ऑप्शन डी इज द करेक्ट. हु इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द बैंक reconciliation statement? Who is responsible? Account holders in the bank, in a bank. Option D is correct. 85. The 4 basic elements of mixed marketing are product, price, promotion, and physical distributions. Option C is correct. Product, price, promotion, physical distribution. Option C is correct. So in question number 86, there is a English portion. History of Indian writing in English is written by who? Written History of India. Naik MK. Option D is correct. Anton Chekhov's The Darling was first published in the year of 1899. 1899. Option A is correct. Which of the following the 4 statement? Here 2 statement, 4 statement is given. We have to choose the false statement. In A, Robert Browning's My Last Duchess is a great dramatic monologue. No, this is no. John Milton, Who Soon Had Time, talks about transitoriness of time. No. Alexander Pope's Ode on Solitude is an appreciation about the simple rust life. No. John Donne, Lovers in Finitude is connected to idealism, existentialism, and realism. Okay, this is correct. D only. So the only D is correct.
for question number 88, option A is correct, only D. In 89, which of the following statement is not true? Let's see the statement A. Lord Alfred Tennyson's Break, Break, Break was the first published in 1852. 1852. Yes, Break, Break, Break. In statement B, Arm and Main is anti-romantic comedy on the theme of the war and love. Oh, no. The Merchant of Venice is adaptation of all the Col di Giorno. Lay your sleeping head, my love is the best known lyrics of the world. No. So the option A is correct, only A. In question number 90, we have to match the table in A given animal form. Here, what is the animal form? Animal form. Animal form is related to George Orwell. Walking tour. Walking tour related to R.L. Stevenson. And Tale of Two Cities is related to Charles Dickens. And the last Mr. Known All is what W.S. Morgan. W.S. Morgan. So the correct option is the C. I think continually of those who were truly great was associated with the thought of Stephen Spender. Option C is correct. In question 92, which of the following statement is false? From the four statement, we have to opt a false statement. In statement A, Wordsworth has defined poetry as the spontaneous overflow of powerful feelings. No. According to Hudson, poetry is the criticism of life. Okay, correct. Coleridge says poetry refers to the best word in the best order. No. Alan Poe defines poetry as the rhythmical creation of the thoughts. No. So the only B option is correct. Option A is correct. Only B answer. B statement is correct. Option A. In question number 93, she had a heart. How shall I say? Too soon made glad, too easily impressed. These lines are taken from where? My last Duchess. The My last Duchess. So the option is correct. The name of those who in their lines fought for life, who were at their heart the fire's centers. So the option is India Italian word. Sorry. So the correct option is Stephen Spencer's poem. Option C is correct. Let's see the next question number 95. Sonnet is derived from the Italian word. Option C is correct. Basic patterns of English was methodology prepared by Hornby. Option B is correct on B. According to Chiaro, language is a system of arbitrary vocal system. Language is a system of arbitrary vocal system. So the option D is the correct. Let's see the question number 98. I is a sound of one is a sound of one is a sound of alveolar alveolar. So the option B is correct. In question number 99, generally falling intonation is used in falling intonation is used in falling intonation is used in ordinary statement. Option A is correct. In question number 100, which of the following statement is false? Let's see the given four statements here. Compound words take stress on the second constituent. Oh, yeah, right. No, this is not correct. This is wrong. So the option statement B, word stress changes depending on the function of the word. Okay. The derivational suffix do not affect the stress pattern of the root of the word. Okay, so yeah. Stress lend rhythm to the language. No. So the only B, both B and C is correct. So the option A is correct. Both B, C. So
इन देयर इज सम हिंदी पोर्शंस। श्रीस्व का 4 वाक्य की रचना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 86, क्या रचना किसने की थी? देवसेना ने किया था। सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट, देवसेना। देवसेना, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89, कबीर किसके समकालीन थे? कबीर किसके समकालीन थे? सिकंदर लोधी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 88, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? इसमें कौन सा तत्सम शब्द है? यात्रा है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 89, कौन छायावादोत्तर काल के कवि है? हरिवंश राय बच्चन जी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 90, क्वेश्चन नंबर, चवर्ग व्यंजनों का उच्चारण स्थान क्या है? सो इसका उच्चारण स्थान कौन सा बोलने से? तालु। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 91, क्वेश्चन नंबर, हिंदी भाषा का लिपि क्या है? हिंदी भाषा का लिपि क्या है? देवनागरी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। सबसे करेक्ट वाला वर्ड को चूज करो बोल रहा है। सो द इसका सबसे करेक्ट आंसर क्या है? सन्यासी। सन्यासी, सन्यासी, सन्यासी। ये सभी सन्यासी वर्ड है, इनमें से हमको करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है सन्यासी का। सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट, सन्यासी। सन्यासी, यहाँ न का मात्रा है ना। क्वेश्चन नंबर 92, हिंदी के सर्वनाम में कारण के कितने भेद होते हैं? इसमें कितना 7 भेद होते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। रामचरितमानस में कितने खंड सोपान है? इसमें भी 7 है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नमस्ते में कौन सी संधि है? नमस्ते में कौन सी संधि है? नमस्ते में स्वर्ग है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। विसर्ग है, सॉरी। ऑप्शन सी करेक्ट। ऑप्शन सी विसर्ग। यह व्यंजनों को कहते हैं ल र। क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन बी अंतस्थ। क्वेश्चन नंबर 97, प्रतिदिन शब्द में क्या सम्मान है? प्रतिदिन डेली का वर्ड में इनमें से कौन सा आशय है? तो अव्ययीभाव ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89, यह विद्या का पीठ है। इस वाक्य में पीठ कौन सा शब्द है? संस्कृत पुल्लिंग। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 99, वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा न हो के लिए एक शब्द का चुनाव कीजिए। सो द इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऊसर। योजना क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन, योजना क्या होता है? शब्दों में या वाक्यों को मिलाने वाले शब्द उसको कहते हैं योजक। ओके, so the option D is correct for the question number 100. So this area for the rough work. So B8 का क्वेश्चन खत्म हो गया। ये थोड़ा लॉन्ग हो गया है, इसमें हिंदी भी है। 2024 का था। वीडियो अच्छा है तो लाइक करना। थैंक यू।